ये इंश्योरेंस क्यों है जरूरी। समझेंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर मोटर इंश्योरेंस के सभी पेज। एक्सपर्ट्स देंगे इंश्योरेंस से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश इंश्योरेंस महाकुंभ। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो बदलो देश के साथ। इंश्योरेंस यानी सुरक्षा की पूरी गारंटी, आर्थिक सुरक्षा यानी आपकी समृद्धि। लाइफ, घर, गाड़ी की टेंशन से रहें दूर, कल की चिंता छोड़ जिए आप भरपूर। जानिए कौन सा इंश्योरेंस क्यों जरूरी, समझिए इंश्योरेंस की कंप्लीट थ्योरी, हर तरह के इंश्योरेंस की पूरी कहानी, समझें दिग्गज एक्सपर्ट्स की जुबानी। इंश्योरेंस महाकुंभ, क्योंकि बीमा जरूरी है। 6 अप्रैल सुबह 10 बजे से लगातार सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। तो क्रेडिट पॉलिसी की खास कवरेज के में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी हैं पूजा और साथ ही सृष्टि। हम कोशिश करेंगे जो पॉलिसी के अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने रखें। हालांकि पोल तो यही कहता है कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, स्टेटस को आएगा, लेकिन इस समय टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है चुनाव चल रहे हैं, अब उनकी डेट्स आ चुकी हैं। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80 वाला क्रूड $90 हो चुका है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो गोल्ड बढ़ रहा है ये कहीं और सिग्नल तो नहीं दे रहा, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है कहीं और सिग्नल तो नहीं दे रहे हैं। टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विडिटी के दम पर हम बार बार नया हाई मार्केट के अंदर बना रहे हैं। क्या मैक्रो इंडिकेटर्स उसको फुलफिल कर रहे हैं? क्या जीडीपी में इस समय ऐसा मौका है कि इसकी दरों को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है? और एक और मौका भी है, क्या Q4 के नंबर से पहले आरबीआई गवर्नर साहब जो बोलेंगे उसका कितना इम्पैक्ट खासकर एनबीएफसीज, बैंकिंग और इससे जुड़े हुए सेक्टर्स पे कितना आएगा? ये सब बड़े मुद्दे हैं, इसलिए पैनल भी बड़ा होगा। एक्सपर्ट्स हमारे ऐसे हैं जो अपने आप में सुपर्ब हैं। मेरे साथ शलभ सक्सेना जुड़ चुके हैं, स्पंदना पूर्ति के एमडी हैं। शलभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। दीपक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे। कोटक एएमसी से संजय पारिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं सोहम असेट मैनेजर्स के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। जैसे हम शुरुआत में कह रहे हैं, हमने पोल भी किया है, उस पोल के मैं कुछ एक हाइलाइट्स आपके स्क्रीन पे वापस से ले आता हूं। और वो पोल एक्चुअली पूजा और अंकुर ने मिलकर बनाया है। तो पूजा एक काम कीजिए, पूरा का पूरा पोल एक बार वापस से दिखा दीजिए, फिर हम मेहमानों से चर्चा करके एक एक पॉइंट से पॉइंट उनसे हम क्लियर करते चलेंगे। पूजा एक बार सारा पोल बता दीजिए। बिल्कुल, तो पहला सवाल तो यही था कि आरबीआई रेपो रेट में बदलाव करेगा या नहीं। तो इसका तो क्लियर कट आंसर एक्सपर्ट्स यही दे रहे हैं कि 100% जानकारी ये मांग के चल रहे हैं कि रेपो रेट में इस बार कोई बदलाव नहीं होगा। जब तक फेड कोई फैसला नहीं लेगा और उनकी तरफ से गार्ड डाउन नहीं होंगे, तब तक आरबीआई की तरफ से यहाँ पर कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। लेकिन कमेंट्री क्या होगी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो अगला सवाल हमारा ये था कि आरबीआई का रुख क्या रह सकता है। तो इसमें भी 100% जानकारों का ये मानना था कि कोई बदलाव नहीं होगा, न्यूट्रल स्टैंस यहाँ पर आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का जो रुख है उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी नरमी हो। बट अब इस बीच काफी सारी चीजें हुई हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि कच्चा तेल का अपने उच्चतम स्तर के पास आ चुका है और इसके अलावा रुपी कमजोर हुए हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर आरबीआई की तरफ से क्या कमेंट्री आती है ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। FY25 में ग्रोथ को लेकर और महंगाई को लेकर उनकी तरफ से क्या आउटलुक आता है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे। और लिक्विडिटी को लेकर भी क्या कमेंट्री आती है, इस पर हमारी नजर रहेगी इस पॉलिसी में। ठीक है, ये पोल और कमेंट्री वाले पॉइंट्स हैं जो कि इस बार के नोटिसेबल होंगे। मिस्टर गवर्नर थोड़ी देर पहले आपको देख भी रहे थे कि आरबीआई ऑफिस के अंदर वो एंटर कर चुके हैं। वो तस्वीरें हम एक बार कोशिश करेंगे वापस से आपको दिखा देंगे और मेरे रिपोर्टर भी मेरे साथ वापस जुड़ जाएंगे, अगर मौका लगा तो उनसे भी हम एक पॉइंट बातचीत करेंगे। लेकिन पूरा मेहमानों का पैनल मेरे साथ तैयार हो चुका है। सिद्धार्थ सान्याल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट है बंधन बैंक के, उन सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं जरा शलभ साहब से पता करना चाहता हूँ। शलभ बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका एनालिसिस क्या है इस समय लिक्विडिटी, ग्रोथ और स्टेटस को, ये तीन चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, आप किसको कितनी कितनी वेटेज दे रहे हो? देखिए, लिक्विडिटी फॉर द राइट एरियाज इज अवेलेबल, मिलती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एट द राइट प्राइस एज वेल। ये बताना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो डिमांड है, डिमांड ऑल्सो इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर टॉकिंग ऑफ अ क्वालिटी डिमांड।
तो क्वालिटी डिमांड ठीक है, लिक्विडिटी ठीक है, रिपो रेट का जैसे कि आपका पोल भी कह रहा है कि एक तरफा व्यू है, मगर जहां तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, ऑब्वियसली लॉट डिपेंड्स ऑन मॉनसून कैसा रहेगा एंड द अदर फैक्टर्स, बट ब्रॉडली अगर मैं डायरेक्शनली बोलूं तो डिमांड इज स्ट्रांग, क्वालिटी इज गुड, द लिक्विडिटी इज फाइंडिंग इट्स वे फॉर द राइट स्पेसेस। ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी आप कह रहे हैं कि ठीक है। कुल मिला के अभी इन्फ्लेशन और मॉनसून ये दोनों का कॉम्बो और जरा चेक करना होगा। सिद्धार्थ सान्याल है हमारे साथ, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं बंधन बैंक के। सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस बार जो पहला आईएमडी का बयान आया उसने कहा गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, उसने अब तक बारिश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है और शायद वो धीरे धीरे करके देंगे ज़रूर। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी हद तक आरबीआई ने बहुत अच्छे से और चुस्त फुर्ती के साथ इसको कम कर रखा है और अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि 90 का क्रूड हो गया, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी बड़ी वॉइसेस नहीं आई है मार्केट में? इन्फ्लेशन का प्रेशर 6 महीना पहले जैसा था, 8 महीना पहले जैसा था, उस हिसाब से काफी कम हुआ है। हम अगर देखेंगे कोर इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन का नंबर इज एट ए मल्टी ईयर लो, at low 3% number, which is quite a healthy sign. आज का दिन ऐसा हो गया है कि वेदर एबरेशंस बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, इसके लिए फूड इन्फ्लेशन एंड एग्रो प्राइस इन्फ्लेशन कभी कभी बहुत ज्यादा स्पाइक होता है एंड उसके वजह से इन्फ्लेशन नंबर में वोलेटिलिटी आता है, बट ब्रॉड नंबर्स अगर देखें और इन्फ्लेशन कम है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस प्रेशर कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट आल्सो सीम टू बी क्वाइट डिसिप्लिन। आरबीआई जो लिक्विडिटी मार्केट में प्रोवाइड करता है, प्राइमरी लिक्विडिटी रिजर्व मनी जिसको बोलते हैं, रिजर्व मनी का ग्रोथ भी आरबीआई काफी कम करके रखा है फॉर लास्ट 2 years. सो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर क्वाइट अंडर कंट्रोल कंपेयर टू 6-8 महीने पहले जैसा था, उस हिसाब से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ही अच्छा कंट्रोल में है एंड दिस एक्चुअली गिव्स आरबीआई अ लिटिल मोर हेडरूम and policy options. I'm not saying that they are going to cut right now, but actually this is opening up a bit of a space for them. ओके ठीक है, एक स्पेस तो बनता ही है, शायद आगे चल के कुछ ब्याज दर में कटौती करें। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो रेपो रेट का पोल भी ये कह रहा है कि 100% एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। एक और चीज़ है जो मार्केट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंगली प्ले हो रही है, वो है जीडीपी को लेकर। नंबर्स काफ़ी रोबस्ट हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि न केवल सरकार इसको प्रोपेल कर रही है, बल्कि मिस्टर गवर्नर ने भी ये बात रखा है कि नहीं सब कुछ ठीक है। ये वो जो तस्वीरें जिसके बारे में जिक्र कर रहा था मिस्टर गवर्नर आरबीआई के ऑफिस में पहुँचते हुए, और अभी थोड़ी देर में 10 बजे वो एक्चुअली बोलना शुरू करेंगे, तो आपको 10:05 तक पता लग जाएगा कि किस तरह का चेंजेस हो रहे हैं। और फिर 12 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। तो आपको ध्यान है, अब आज की पॉलिसी से पहले कुछ दिन पहले मिस्टर गवर्नर खुद वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक आरबीआई के इवेंट में थे और आरबीआई की उसमें काफ़ी तारीफ भी हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। जीडीपी की मैं बात उठा रहा था और दीपक अग्रवाल जी से मैं क्वेश्चन लेता हूँ। दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। जीडीपी का क्वेश्चन डिबेटेबल तो नहीं है, लेकिन जीडीपी के नंबर्स और थोड़ा सा कोरिलेशन डिबेटेबल हो सकता है कि भाई आप बढ़ा रहे हो तो उसके पीछे की रीजनिंग दे दो, अगर आप स्टेटस को रख रहे हो तो उसके पीछे की रीजनिंग दे दो। आपको जीडीपी के नंबर्स में क्या रीड कर रहा है सर, बिटवीन द लाइंस क्या रीड कर रहे हैं आप दीपक भाई? नहीं, इसी अगर हम देखेंगे ये साल अप्रैल 2023 में आरबीआई ने ये साल FY24 की ग्रोथ एस्टिमेट 7% पे रखी थी और पूरा मार्केट 6.25 6.5 की बात कर रहा था, और साल खत्म होते होते ये साल की ग्रोथ सीएस बेसिकली लग रहा है, आरबीआई ने रिकॉर्ड पे बोला है, फिनमिन ने भी बोला है कि ये साल की ग्रोथ 8% प्लस होगी। नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ फरवरी पॉलिसी में आरबीआई ने कहा था कि FY25 में इंडिया की ग्रोथ 7% से ग्रो होगी, बट शायद FY24 की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखते हुए नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ आरबीआई शायद अपवर्ड रिवाइज करे। सो सर्विस सेक्टर जो है इट इज डूइंग वेल, कंस्ट्रक्शन इज बूमिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज डूइंग गुड, उसके कारण आपकी जीडीपी ग्रोथ हायर रिवाइज हो रही है। और ये कारण हो सकता है कि आरबीआई अपना स्टांस भी चेंज नहीं करे, आज विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस रखे, क्योंकि एक है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के कारण आरबीआई को लीवे मिलता है, आरबीआई कैन एक्चुअली वेट फॉर ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग टू बिगिन बिफोर इट चेंज द स्टांस एंड एक्चुअली स्टार्ट कटिंग रेट्स। तो ये एक जगह इन्फ्लेशन नीचे है, इन्फ्लेशन अगर 4.5% पे है, आपकी पॉलिसी रेट 6.5% पे है, तो आपका रियल रेट 2% है, वो काफी ऊपर है।
और आरबीआई को स्टांस चेंज और रेट कट करने की स्पेस ओपन अप करता है, बट एट द सेम टाइम सिंस ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, वो आरबीआई को समय दे रहा है कि एक्चुअली वो देखे कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आरबीआई शायद स्टांस चेंज करे और रेट कट करना शुरू करे। कुल मिलाकर स्टांस में भी कुछ खास बड़ा चेंजेस आज नहीं दिख रहे, तो आज कुल मिलाकर पॉलिसीज के अंदर ज़्यादा चीज़ें कमेंट्री इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ इंडिकेशंस होंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी वाला हिस्सा ज़्यादा दिखेगा, और ये कमेंट्री के अंदर आपको मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा नोटिसेबल पॉइंट होंगे, बजाय सीधे सीधे सपाट कोई फैक्चुअल डाटा आ जाए। संजय पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोम एसेट मैनेजर्स के। संजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला और हमारे पैनल का हिस्सा बने। आप हमको थोड़ा समझाइए कि 91 का क्रूड आरबीआई इसको कितनी बड़ी वेटेज देने जा रहे हैं, कहीं ये तो नहीं बोलने जा रहे हैं कि आज 91 का क्रूड हो गया, इन्फ्लेशन हमारे लिए सिर दर्द हो गया फिर से? नहीं, अगर आप देखें उनकी कमेंट्री तो इन्फ्लेशन पे उनके डेफिनेटली दे हैव एन आई ऑन इन्फ्लेशन, and of course the core inflation, as our panelists said, is lower, which is very good, but overall inflation they will keep an eye, and हमें मानसून भी देखना है और क्रूड भी important है because sensitivity है। Input inflation soft था and that has helped also the manufacturing sector, so they will certainly keep an eye, and overall but the good part is RBI एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एंड ट्रांजिएंट में डिफरेंस देखते हैं। सो अगर उनको लगता है ये ट्रांजिएंट है देन दे विल सी थ्रू इट, एंड इफ दे फील कि नहीं स्ट्रक्चरल हो रहा है तो दे विल डिले द रेट कट्स, बट वी आई मीन एट लीस्ट वी बिलीव दैट Fed, what Fed does is also important, and in the second half based on what Fed does, they will accordingly look at our inflation, look at our monsoons, and then take a call. सिद्धार्थ सान्याल जी नमस्कार, मैं पूजा बोल रही हूँ। लास्ट पॉलिसी में और इस पॉलिसी में अगर देखें तो एक चीज जो है वो थोड़ा बदलाव हुआ है, वो है करेंसी। पिछली पॉलिसी में तो आरबीआई कंफर्टेबल था करेंसी को लेकर, लेकिन इस पॉलिसी हमने देखा रुपी में थोड़ी कमजोरी, और ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो ये जो रुपी में कमजोरी आई है, इसको आरबीआई इस पॉलिसी में कितना तवज्जो देगा और किस तरह की कमेंट्री आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर? वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स ट्रू दैट लास्ट फ्यू वीक्स में हम लोग देखा है थोड़ा सा रुपी में वीकनेस आया, बट जनरली अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से जाए, बीओपी का सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग। अगले फाइनेंशियल और ये फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो 1.5% ऑफ जीडीपी से कम रहेगा, एज वेल एज capital flow into the country from both FII flows to both debt and equity market, as well as a little bit of FDI flows, we expect to be very, very strong. So overall, ये सिचुएशन बन सकता है कि बीओपी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सरप्लस में शायद ये ईयर रहेगा। ऐसा अगर रहेगा एक्चुअली रुपी के लिए ये काफी सपोर्टिव रहेगा, एज वेल एज आरबीआई को मौका मिलेगा एक्चुअली डॉलर थोड़ा खरीद के उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का किटी जो है और थोड़ा बढ़ा लेने के लिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी strong pullback in the rupee just because RBI will be buying, but generally rupee के लिए बहुत ज्यादा खतरा ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है going ahead in this particular financial year, because fundamentally overall Indian BOP seems to be in a very strong footing. हम पॉलिसी के और क्वेश्चंस आपके सामने रखें। ठीक जब मिस्टर गवर्नर आएंगे 10 बजे अपनी बात रखने के लिए, उससे पहले मार्केट का मैं सेटअप आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी हरे निशान में है, निफ्टी इस समय लाल निशान में है, करीब 28 पॉइंट नीचे है, और बैंक निफ्टी करीब 42 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट एचडीएफसी के अंदर आज फिर से 1% की बढ़त है। मेजॉरिटी ऑफ द बैंक आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तेजी के अंदर। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉइंट्स में बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। 126 शेयर एक लोग ऐसे हैं जो कि निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और 96 ऊपर की तरफ। तो आपको रेशो पता लगी होगी, 12:9 की रेशो है, ठीक। और बैंक निफ्टी के अंदर रेशो जस्ट रिवर्सल की है, वो रेशो है
38:45, डेट मीन्स 45 लोग ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को लेकर जाना चाह रहे हैं और 38 नीचे। ये मार्केट का सेटअप था जो हमने आपके सामने रखा। एडवांस डिक्लाइन बेहद खराब नहीं है, बट थोड़ा डिक्लाइंस आज आया हुआ है, इसलिए मार्केट को रिकवरी करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और थोड़ी देर में मिस्टर गवर्नर जब अपनी बात रखेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है मार्केट से शेक करेगा, लेवल्स को रिस्पेक्ट करके रखेगा। पूजा, बस अब 10 बज चुके हैं, हम वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट आना शुरू होंगे, और मार्केट उसके पहले देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा स्टेबल है, फिलहाल लाल निशान में 48,000 के आसपास टिका हुआ है। कुछ ही मिनट रह गए हैं आरबीआई की पॉलिसी की शुरुआत होने में, लेकिन शलभ एक सवाल अगर मैं आपसे ले पाऊं क्विकली, आपका एक उस पर टेक चाहूंगी। This is the first monetary policy statement of the current financial year 2024-25, and this is how it goes. As you would be aware, earlier this week we commemorated the 90th year of the Reserve Bank of India. The journey of this august institution is closely related to the evolution of the Indian economy. Numerous historic events have occurred during these 9 decades, and they consist of the nationalization of the Reserve Bank in 1949, the planning era, bank nationalization, wars, droughts, the fall of the Bretton Woods system, oil shocks, a precarious balance of payment situation and the subsequent market reforms, the Asian and the global financial crisis, the taper tantrum, and finally the COVID-19 pandemic and the geopolitical hostilities of the recent years. During this journey, the Reserve Bank was always at the forefront, combining its developmental and regulatory roles in steering the Indian financial system and the economy towards stability. While doing so, the Reserve Bank has discharged its responsibility with integrity and professionalism. Compared to many other central banks, the Reserve Bank has a much broader range of functions which is vital for ensuring macro-financial stability of a modern and complex economy like India. There are functional complementarities among the various responsibilities of the Reserve Bank of India. Being a full-service central bank, the Reserve Bank is well positioned to take a holistic view of various critical issues confronting the economy and the financial sector, and it's also well positioned to take appropriate steps in the best interest of the economy. We continuously strive to learn, adapt, and innovate while performing our multiple responsibilities. I would now like to focus on the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee meeting, which met on 3rd, 4th, and today, 5th of April. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, remains at MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, the growth inflation dynamics have played out favorably. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. Headline inflation has eased to 5.1% during both January and February, and this has come down to 5.1% in these 2 months from
the earlier peak of 5.7% in the month of December. Core inflation has also declined steadily over the past 9 months to its lowest level in the series. The fuel component of CPI remained in deflation for 6 consecutive months. Food inflation pressures, however, accentuated in February. Looking ahead, robust growth prospects provide the policy space to remain focused on inflation and ensure its descent to the target of 4%. As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. Under these circumstances, monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure anchoring of inflation expectations and fuller transmission of the past monetary policy actions. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. The MPC will remain resolute in its commitment to aligning inflation to the target. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I will begin with the scenario relating to global growth. The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high-frequency indicators. Now, in my statement, whatever I am saying, it is backed up with a lot of data which are there in the footnotes. So those of you who are interested could refer to this statement, which as usual will be uploaded in the RBI website immediately after this statement is over. So a lot of data backing up whatever I am saying is available in the various footnotes of my statement. You may like to refer to it. Let me start again on the global growth part. The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high-frequency indicators. Global trade is expected to grow faster in 2024, although weaker than its historical average. Inflation is moving closer to targets, but the last mile of disinflation is turning out to be challenging. Services inflation in advanced economies remains sticky amidst tight labor markets. Accordingly, central banks are cautious in their communications, thereby tempering market expectations about the timing and magnitude of interest rate cuts later during this year. Equity markets have gained while bond yields and the US dollar have remained volatile. The overall outlook is challenged by continuing geopolitical conflicts, disruptions in trade routes, and high public debt burden. In the last monetary policy statement, if you recall, I had expressed concerns about the high levels of public debt in both advanced and emerging market economies, that is the EMEs. These are dormant risks which could erupt abruptly. Debt to GDP ratio, which rose during the pandemic, remain elevated and are projected to increase further with rising interest burden and cost of borrowing, thus raising debt sustainability concerns. Worsening debt situation in advanced economies, in particular, can generate spillovers for the emerging market economies in the form of swings in capital flows and volatility in financial markets. The emerging market economies with rising levels of public debt in particular would be vulnerable to these spillover effects. Credible fiscal consolidation plans, particularly in major advanced economies, focusing on growth-enhancing investment would be necessary to address this challenge, not only for themselves, but also I think for the overall global economy. India, however, presents a different picture on account of its fiscal consolidation and faster GDP growth. Turning to domestic growth, the domestic economic activity continues to expand at an accelerated pace, supported by fixed investment and improving global environment. The second advance estimates placed the real GDP growth at 7.6%
for 2023-24, the third successive year of 7% or higher growth. From the supply side, industrial activity led by manufacturing continued its momentum. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, displayed a sustained expansion in both February and March, touching a 16-year high in the month of March. Services sector exhibited broad-based buoyancy, with all sectors within the services sector registering strong growth. The PMI services remained above 60 during February and March, suggesting sustained healthy expansion. With rural demand catching up, consumption is expected to support economic growth in 2024-25. Urban consumption stayed buoyant, as evident from various indicators. Details are given in the footnote. The resilience in cement production, together with strong growth in steel consumption and production and import of capital goods, augur well for the investment cycle to gain further traction. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources at rupees 31.2 lakh crore. I repeat, at rupees 31.2 lakh crore during 2023-24 is significantly higher than that of the previous year, which was 26.4 lakh crore. External demand improved in February, with exports registering double-digit expansion. Trade deficit, however, widened in February as imports also accelerated. Going forward, the outlook for agriculture and rural activity appears bright, with good Rabi wheat crop and improved prospects of Kharif crops due to expected normal southwest monsoon. Strengthening of rural demand, improving employment conditions and informal sector activity, moderating inflationary pressures, and sustained momentum in manufacturing and services sector should boost private consumption. Let me read this sentence again, because there are quite a few points in this. Strengthening of rural demand, improving employment conditions and informal sector activity, moderating inflationary pressures, and sustained momentum in manufacturing and services sector should boost private consumption. As per our survey, consumer confidence 1 year ahead reached a new high. The prospects of investment activity remained bright, owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based. Persisting let me just rephrase it. The prospects of investment activity remain bright, owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based, persisting and robust government capital expenditure, healthy balance sheets of banks and corporates, and rising capacity utilization, and finally strengthening business optimism as reflected in our surveys. I think the sentence is a bit long. It's better that I read it out again for greater clarity. And sorry about that, but I think it provides greater clarity. The prospects of investment activity remain bright, owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based, persisting and robust government capital expenditure, healthy balance sheets of banks and corporates, rising capacity utilization, especially in the manufacturing sector, and strengthening business optimism as reflected in our surveys. Improving global growth and trade prospects, coupled with our rising integration in global supply chains, are expected to propel external demand for goods and services. The headwinds from protracted geopolitical tensions and increasing disruptions in trade routes, however, pose risks to the overall outlook. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for the current financial year 2024-25, which started on 1st April, the real GDP growth for 24-25 is projected at 7%, with Q1 at 7.1%,
Q2 at 6.9%, and both Q3 and Q4 at 7% each. The risks are evenly balanced. Turning to inflation, food price uncertainties continue to weigh on the inflation trajectory going forward. A record Rabi wheat production would help temper price pressures and replenish the buffer stocks. As you would recall, the buffer stocks had slightly dipped, but I think the record Rabi production of wheat is expected to replenish whatever depletion had taken place. Moreover, early indication of a normal monsoon augurs well for the Kharif season. International food prices also remain benign. The tight demand-supply situation in certain categories of pulses and the production outcomes of key vegetables warrant close monitoring, especially in the background of the forecast of above normal temperatures in the coming months. And these above normal temperatures, as per the current forecast, are expected to prevail in April, May and June, and not beyond June. That is the current forecast. Frequent and overlapping adverse climate shocks pose upside risks to the outlook on international and domestic food prices. Cost push pressures faced by firms are seeing an upward bias after a period of sustained moderation. Deflation in fuel is likely to deepen in the near term, following the cut in LPG prices in the month of March. Notwithstanding the cut in petrol and diesel prices in mid-March, the recent uptick in crude oil prices, especially in the recent few days, they need to be very closely monitored. Continuing geopolitical tensions also pose upside risk to commodity prices and supply chains. Assuming a normal monsoon next year, CPI inflation when I say normal monsoon for next year, I mean the current year 24-25. CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? I have explained the growth situation, I have explained the inflation scenario. Synthesizing everything, what does it mean? What implications it has for monetary policy? And that is precisely what I would like to explain now. Inflation has come down significantly but remains above the 4% target. Food inflation continues to exhibit considerable volatility, which is impeding the ongoing disinflation process. High and persistent food inflation could unhinge anchoring of inflation expectations, which is underway. Our ongoing effort is to ensure fuller transmission of policy actions and anchoring of household inflation expectations. The strong growth momentum, together with our GDP projections for 24-25, give us the policy space to unwaveringly focus on price stability. Now, 2 years ago, around this time, when CPI inflation had peaked at 7.8% in April 2022, the elephant in the room was inflation. The elephant has now gone out for a walk and appears to be returning to the forest. We would like the elephant to return to the forest and remain there on a durable basis. In other words, it is essential in the best interest of the economy that CPI inflation continues to moderate and aligns to the target on a durable basis. Till this is achieved, our task remains unfinished. The success in the disinflation process so far should not distract us from vulnerability of the inflation trajectory to the frequent incidence of supply-side shocks. Our effort is to ensure price stability on an enduring basis,
paving the way for sustained period of high growth. I would now like to turn to the aspect of liquidity and financial market conditions. In the February monetary policy statement, if you recall, I had mentioned that liquidity conditions were driven by exogenous factors which were likely to correct in the foreseeable future. Liquidity conditions eased during February and March in the wake of increased government spending, Reserve Bank's market operations, and the return leg of US dollar and Indian rupee sale by swap auction, which had been done earlier in 2022. In particular, liquidity situation improved in March with system liquidity turning intermittently surplus in the first half of the month. In these circumstances, the Reserve Bank conducted 14 fine-tuning variable rate repo operations, that is VRRR operations during February and early March to absorb intermittent surplus liquidity. Anticipating the seasonal tightening of liquidity at end March, the Reserve Bank injected liquidity through variable rate, that is VRR operations, both main and fine-tuning operations. Consequently, the average borrowings under the MSF window moderated. Liquidity conditions have, however, again turned surplus from March 30th, necessitating VRR auctions from 2nd of April. So you would have noticed in the last 2-3 days, we have been conducting more than one VRRR auctions. On 2nd April, then again we did it on 3rd April. So last 2-3 days we have been doing it. And today, as you know, there is a variable rate, there is a what you call, as per our cycle, we are doing VRR operation for 14 days, a VRRR operation for 14 days. Now, reflecting these liquidity developments, the weighted average call rate, that is WACR, exhibited a softening bias and has hovered near the repo rate since the last policy meeting. In tandem, rates in the collateralized segment of the call money market have also softened. Financial conditions remained conducive as reflected in reduced term spread in the G-Sec market and stable risk premium in the bond market. In the credit market, monetary transmission continues to be work in progress. Looking ahead, the Reserve Bank will remain nimble and flexible in its liquidity management through both main and fine-tuning operations in both repo and reverse repo. We will deploy an appropriate mix of instruments to modulate both frictional and durable liquidity so as to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner that preserves financial stability. The Indian rupee has remained largely range-bound as compared to both its emerging market peers and a few advanced economies during the financial year 2023-24, that is till 31st March last. The Indian rupee was the most stable among major currencies during this period. This is very important. The Indian rupee was the most stable among major currencies during this period. As compared to previous 3 years, the Indian rupee exhibited lowest volatility in 2023-24. The relative stability of the Indian rupee, which I just mentioned, it reflects, I would emphasize, the relative stability of the Indian rupee reflects India's sound macroeconomic fundamentals, financial stability, and improvements in our external position. Turning to financial stability, let me say that latest data as at end December 2023 show that the key indicators of capital and asset quality of scheduled commercial banks continued to be healthy. The financial indicators of non-banking financial companies, that is NBFCs, are also in line with that of the banking system as per the latest data available. Let me emphasize here that banks, NBFCs and other financial entities must continue to give highest priority to quality of governance and adherence to regulatory guidelines. Financial sector players by and large operate with public money.
be it of depositors in banks and select NBFCs or investors in bonds and other financial instruments. They should always be mindful of this aspect. The Reserve Bank will continue to constructively engage with financial entities in this regard. It needs to be recognized that financial stability is a joint responsibility of all stakeholders. The Reserve Bank has also been engaging with the regulated entities and various stakeholders for simplifying its regulations and reducing compliance burden. As part of this endeavor, the recommendations of the Regulations Review Authority RRA 2.0 constituted by the Reserve Bank have been largely implemented. The RRA 2.0 has set a new benchmark for meaningful engagement between the regulator and the regulated entities. Moving further in the same direction, internal review groups within RBI were formed in 2023 to rationalize, simplify and remove obsolete regulations and streamline the reporting mechanism. In pursuance of the recommendations of the RRA 2.0, that is the Regulations Review Authority which was constituted by the RBI. So in pursuance of the recommendations of the RRA 2.0 and the internal review groups which we constituted in 2023, more than 1,000 circulars have been withdrawn. A master direction for rationalizing and harmonizing supervisory returns has also been issued. The Reserve Bank will continue to follow a consultative approach and undertake review of regulations in line with the evolving financial landscape. Turning to external sector, during the first 3 quarters of 23-24, India's current account deficit narrowed significantly on account of a moderation in merchandise trade deficit, coupled with robust growth in services exports and strong remittances. India's merchandise and services exports have grown at a healthy pace in the fourth quarter of 23-24. India continues to be the largest recipient of remittances in the world. The cost of receiving remittances is gradually coming down. Overall, the current account deficit for 2024-25 is expected to remain at a level that is both viable and eminently manageable. On the external financing side, India's foreign portfolio investment, that is FPI flows, saw a significant turnaround in 23-24. Net FPI inflows stood at $41.6 billion during 23-24, as against net outflows in the preceding 2 years, which were in the order of 14.1 billion outflow in 21-22 and 4.8 billion outflow in 22-23. This is the second highest level of FPI inflow after 23-24. Net foreign direct investment moderated to $14.2 billion in April-January 23-24 from 25 billion a year ago. External commercial borrowings, that is ECBs, and non-resident deposits recorded higher net inflows compared to the previous year. The amount of ECB agreements also grew markedly in 2023-24 up to February 24. Now all this data is given, details are given in the footnote. India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29th this year, March 29, 2024. I repeat, India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29, 2024. Latest data on various external vulnerability indicators suggest improved resilience of India's external sector. We remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. Now, talking about the forex reserves, I recall that in 2021 our forex reserves had also reached 642 plus
billion US dollars. Then following the commencement of the war in Ukraine and the outflow of dollar from India as well as from several other countries on safe haven demand, there were concerns that forex reserves of India was going down, and at one point it had gone down. Our forex reserves had gone down to about $524 billion. And at that time, I think several questions were raised about, what was RBI doing, whether RBI was on the right track. If you recall, at that time, we had very clearly assured that the decline in forex reserves was partly due to, the change in valuations of our assets, and also partly due to our intervention in the market to ensure an orderly depreciation of the rupee, which is a part of our policy, ensuring orderly depreciation or orderly appreciation. And we had that time very clearly and firmly stated that we are using our forex reserves in a very judicious manner. It was a strong umbrella which we had built up, and we are using it because it was raining heavily. And we were mindful of what we were doing. We knew what is our purpose and in which direction we are moving. And as you would see, now the reserves have again risen, and they stand at an all-time high of 642.6 billion US dollars, 645.6 billion as of 29th March. So, this is one area on which the Reserve Bank remains committed. Number one, to sort of ensure that, the exchange rate of the rupee is market determined. There are inflows and outflows of dollars happening, but it is our focus, it is our prime focus to build up a strong umbrella, a strong buffer in the form of a substantial quantum of forex reserves, which will help us when the cycle turns or when it rains heavily. So let me move forward. Sorry for that digression, but I thought it was necessary to set the record straight. I shall now announce certain additional measures. The first announcement relates to trading of sovereign green bonds in the International Financial Services Center, IFSC. With a view to facilitating wider non-resident participation in sovereign green bonds, a scheme for investment and trading in these bonds in the IFSC will be notified very shortly. The second announcement relates to the RBI Retail Direct Scheme and introduction of a mobile app to operate in the RBI Retail Direct Scheme. The Reserve Bank Retail Direct Scheme was launched in November 2021 for enabling the retail investors to participate in the GSEC market, both in the primary as well as in the secondary market auctions and operations. It is now proposed to launch a mobile app for accessing the Retail Direct portal. This will be of great convenience to retail investors and deepen the GSEC market further. The next announcement relates to review of liquidity coverage ratio, that is LCR framework. Technological developments have enabled bank customers to instantly withdraw or transfer money from their bank accounts. While improving customer convenience, this has also created challenges for banks to deal with potential situations when, due to certain factors, a large number of depositors decide to instantly and simultaneously withdraw their money from the banks. The developments in certain advanced jurisdictions during the last year demonstrated the difficulties it can create for banks. The difficulties it can create for banks to deal with such situations when there is heavy outflow of, heavy outflow or transfer of deposits. And this happens only if that particular bank is in an acute stress. It's not a normal thing which happens, but then the banks will have to remain prepared for all eventualities. A need has therefore arisen to undertake a comprehensive review of the LCR framework for banks. A draft circular will be issued shortly for stakeholder consultation. Our approach is to have a balanced approach, and as I said a little while ago, we follow consultative approach, so therefore the draft circular will enable the stakeholders and the banks to give their views and opinions and suggestions, which will be taken into consideration by the Reserve Bank before arriving at a final decision.
The next announcement relates to dealing in rupee interest rate derivative products for small finance banks. At present, small finance banks are permitted to use only interest rate futures for proprietary hedging. It has now been decided to allow small finance banks to use permissible rupee interest derivative products. This will allow further flexibility to small finance banks for hedging their interest rate risk and enhancing their resilience. The next announcement relates to enabling UPI for cash deposit facility. Deposit of cash through cash deposit machines, that is CDMs, is primarily being done through the use of debit cards. Given the experience gained from cardless cash withdrawal using UPI at the ATMs, it is now proposed to facilitate deposit of cash in CDMs, that is in the cash deposit machines, using UPI. This measure will further enhance customer convenience and make currency handling process at banks more efficient. And the next announcement relates to, I have two more announcements and I shall be quick. Next announcement relates to UPI access for prepaid instruments through third-party apps. At present, UPI payments from prepaid payment instruments, that is PPIs, can be made only by using the web or mobile app provided by the PPI issuer itself. It is now proposed to permit the use of third-party UPI apps for making UPI payments from these PPI wallets. That means the PPI wallet holders no longer have to be completely dependent on the PPI issuer, but they can use any other third-party app which is operating under the UPI. This will further enhance customer convenience and boost adoption of digital payments for small value transactions. And the final announcement relates to distribution of central bank digital currency, that is CBDC, the e-rupee, through non-bank payment system operators. The CBDC pilots are currently in operation with increasing number of use cases and participating banks. It is proposed to make CBDC retail accessible to a broader segment of users by enabling non-bank payment system operators to offer CBDC wallets. This will facilitate testing of resiliency of the CBDC platform to handle multi-channel transactions. Let me now conclude, and I would like to state that as we progress towards RBI at 100, the upcoming decade is going to be a transformational journey. The Reserve Bank will continue to focus on preserving financial stability and promoting a system that is robust, resilient and future ready. And it will be robust, resilient and future ready to support economic growth. Price stability will be a key component of this endeavor. Turning to the present, inflation is on a declining trajectory and GDP growth is buoyant. At this juncture, we should not lower our guard but continue to work towards ensuring that inflation aligns durably and sustainably to the target. Our goal is in sight and we must remain vigilant. We are inspired by the profound words of Mahatma Gandhi, and I quote, "One must persevere and have patience. Success is the inevitable result of such effort." Thank you. Namaskar. बिल्कुल, तो ये थी आरबीआई गवर्नर के स्पीच आप सुन रहे थे। कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। जो बड़ी घोषणा हुई वो ज्यादातर अनुमान के मुताबिक ही थी। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट बिना बदलाव के 6.5% पर बरकरार। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का रुख बरकरार। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने दरों में बदलाव नहीं करने के पक्ष में लिया। और इसके अलावा ग्रोथ और महंगाई को लेकर जो आउटलुक आया है, FY25 के लिए भी जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर बरकरार रखा है और सीपीआई अनुमान भी 4.5% पे बरकरार रखा है। एक थोड़ा बदलाव हुआ है जीडीपी ग्रोथ में, जो कि थोड़ा नेगेटिव है, ज्यादा नहीं। Q1 FY25 के लिए जो जीडीपी अनुमान है
वो 7.2% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। लेकिन बाकी सबके लिए ग्रोथ कायम है, बरकरार है, और महंगाई आउटलुक भी कहीं ना कहीं वहां पर कमी देखने को मिली है। और भी काफी सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, और लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखें, पॉलिसी को सम अप करने की कोशिश करें तो अनुमान के मुताबिक ही रही। आरबीआई गवर्नर ने FY24 का जो भी रिपोर्ट कार्ड था, इकोनॉमी की स्थिति थी, वो सामने रखी। ज्यादातर पॉजिटिव बातें ही निकल कर आई हैं, कुछ नेगेटिव नहीं था। कोई बड़ा अनाउंसमेंट रेगुलेटरी या पॉलिसी के फ्रंट पर नहीं था। तो ओवरऑल अगर बात करें, पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही रही। अगर इसको सम अप करने की कोशिश करें, हम अपने एक्सपर्ट से भी उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी उसके बाद देखिए, शानदार मजबूती, 111 अंक ऊपर है इस वक्त बैंक निफ्टी। और निफ्टी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी करीब लाल निशान में, लेकिन सपाट कारोबार ही देखने को मिल रहा है। चलिए क्विकली अब अपने साथ हमारे पैनल को भी शामिल कर लेते हैं। गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद है उसमें दीपक अग्रवाल, CIO डेट कोटक AMC से, किशोर लोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूग्रो कैपिटल से, सुनील कुमार सिन्हा इंडिया रेटिंग से, और संजय पारेख भी हमारे साथ मौजूद हैं सोहम एसेट मैनेजर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दीपक जी, सबसे पहले आपसे एक क्विक टेक, RBI की पॉलिसी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री थे जिसको कि आपने नोटिस किया, वो हमें बताइए, और ओवरऑल पॉलिसी पर आपका व्यू क्या निकल कर आया? सी पॉलिसी ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन थी, और हमें लग रहा था कि थोड़ा आरबीआई ग्रोथ टारगेट थोड़ा अपवर्ड रिवाइज करे, गिवन दैट के FY24 में हमारी ग्रोथ रेट 8% प्लस रहने वाली है। एंड तो हमें लग रहा था कि ग्रोथ में प्रोबली, बिकॉज डॉक्टर माइकल पात्रा ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके कारण उनका एस्टिमेट है कि FY25 की ग्रोथ 730-740 के करीब होती है। तो हमें लग रहा था कि FY25 की ग्रोथ भी आरबीआई अपवर्ड रिवाइज करेगा। सेकंड, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन मार्केट की एक्सपेक्टेशन की थी कि 4.5 के बदले कहीं आरबीआई उसको 430-440 डाउनवर्ड रिवाइज करता है। बट लगता है कि ये जो रिसेंट स्पाइक हमने क्रूड में देखा है, उसके कारण आरबीआई ने 4.5% पे ही नेक्स्ट ईयर की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन रखी है। सी ब्रॉडली अगर हम देखेंगे कि हमारा रिपो रेट आज 6.5% है, और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो 4.5% के करीब है, तो 2% रियल रेट काफी हाई है। तो थोड़ी ब्याज दरें नीचे लाई जा सकती है, बट ऐसा लग रहा है कि बिकॉज अभी तक हमने मॉनेटरी ईजिंग यूएस में देखी नहीं है। यूएस में भी साल के शुरुआत में 125-150 बेसिस पॉइंट रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी, वो आज 65 से 70 बेसिस पॉइंट के करीब नीचे आ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि यस, आरबीआई थोड़ा समय लेना चाहता है, देखना चाहता है कि डेवलप मार्केट में एक्चुअली मॉनेटरी ईजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और कब हो रही है। तो हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ में यूएस में भी हम मॉनेटरी ईजिंग देखेंगे, और सेकेंड हाफ में आरबीआई भी अपना स्टैंड चेंज करके एक 25 से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकता है। बिल्कुल, तो आगे रेट कटौती देखने को मिलेगी। हालांकि उस पर क्लियर कट थोड़ा अपना व्यू नहीं शेयर किया है, लेकिन जैसा कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कह रहे हैं, कमेंट्री आ रही है, उसी तर्ज पर आरबीआई गवर्नर ने भी अपनी कमेंट्री रखी। यूग्रो कैपिटल से किशोर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर जी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किए आपने आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में? बैंकों को लेकर भी एक दो चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं, अगर वो आप हमारे दर्शकों के लिए भी हाईलाइट कर सके, और आपने पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या कुछ पॉइंट नोटिस किए? तो यदि आप आरबीआई की लास्ट 3-4 पॉलिसियां देखेंगे, तो आरबीआई की पॉलिसी में एक चीज निरंतर तौर पर नजर आ रही है कि आरबीआई का फोकस बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर है। इस वक्त इन्फ्लेशन काफी मॉडरेट हो गया है, और करीबन इन्फ्लेशन इस साल 5.1% है, जो कि अगले साल आरबीआई का टारगेट 4.5% है। और ये आरबीआई लगातार इस बात पे हाथ कर रहा है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन 4% तक लेके आना है। इसीलिए आज रियल जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है और ग्रोथ का सवाल है, दोनों जहां करीब करीब ग्रोथ सस्टेन बनी हुई है, और लिक्विडिटी आरबीआई अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहा है। आरबीआई ने मार्च के महीने में 14 बार इंटरवेंशन किया, और आरबीआई ने जब मार्च में लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी, तो आरबीआई ने मार्केट में सफिशिएंट लिक्विडिटी डाली थी, और आरबीआई इस महीने जब थोड़ी सी सरप्लस लिक्विडिटी हुई तो उन्होंने विड्रॉ किया है, और आरबीआई लगातार लिक्विडिटी पे नजर बनाए हुए है, और जब बार बार इंटरवेंशन कर रहा है, तो जहां ग्रोथ सस्टेन हो रही है और लिक्विडिटी आरबीआई कंट्रोल किए हुए है, इसलिए शायद इस वक्त रेट कटौती पे आरबीआई का इतना फोकस नहीं है, और इन्फ्लेशन पे आरबीआई का फोकस है। लेकिन हमारा मानना है कि आगे
आने वाले वक्त में हम रेट कट देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो कि अगले 2 से 3 पॉलिसी के अंदर हमको दिख सकता है। हम आशा कर सकते हैं कि इस साल की तीसरी तिमाही में हमारे यहाँ भी रेट कट होगी, जो कि इस साल 50 से 75 बेसिस पॉइंट हो सकती है। इस बैंकिंग के नजरिए से देखेंगे तो एलसीआर फ्रेमवर्क में रिव्यू की बात कही गई है, जहां की कुछ बैंकों को लग रहा था कि अचानक काफी सारे डिपॉजिटर विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पर एक एलसीआर फ्रेमवर्क को रिव्यू करने की बात कही गई है और उसकी एक ड्राफ्ट पॉलिसी इशू की जाएगी और आने वाले वक्त में बेस्ड ऑन द फीडबैक आरबीआई एलसीआर फ्रेमवर्क बैंकों का रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा 2 और बड़ी बातें सामने आई कि यूपीआई का जो यूज है वो भारतवर्ष में इतना बढ़ा हुआ है, उसको और आरबीआई उसको और आगे फोकस कर रहा है। कैश डिपॉजिट यूपीआई के थ्रू करने की नई व्यवस्था की जा रही है और इसके अलावा जो थर्ड पार्टी पेमेंट है यूपीआई के थ्रू, उसका भी अब इस्तेमाल करने की इजाजत आरबीआई दे रहा है। तो ये 2 बड़ी बातें और निकल के आई है जो कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर इस बीच अब हमारे साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से अजय कंवल, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरबीआई पॉलिसी के लिए क्या कुछ बड़े टेकअवेज आपके लिए रहे, और साथ ही एक बार लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो कि एक फ्रेमवर्क की बात हो रही है, आरबीआई बोल रहा है कि अभी एक फ्रेमवर्क लाएगा, अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे राय लेने के लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं और पूरे सेक्टर के लिए क्या कुछ इम्पैक्ट कर सकती है खबर? राइट, सो पहले नमस्कार सबको। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड में रेट कटेंगे, हमारे भी आगे चल के कट सकते हैं। आई थिंक दैट इज अ रियलिटी, बट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज आवर जीडीपी। सो आफ्टर हियरिंग द गवर्नर वी शुड टेक ग्रेट कॉन्फिडेंस कि हमारा जीडीपी भी अच्छा चल रहा है। सी, काफी जगह रेट कट इसलिए रहा, इन्फ्लेशन भी कम है पर ग्रोथ भी नहीं है। हमारे यहाँ दोनों पॉजिटिव्स हैं, विच इज इन्फ्लेशन इज ऑन अ डाउन ट्रेंड बट ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक दैट वी शुड टेक ग्रेट हैप्पीनेस एंड कंफर्ट फ्रॉम। सेकेंड, आई थिंक वी आर वेरी कंसिस्टेंट, हमारा माइंड बहुत क्लियर हमें क्या करना है और हम इंडिया के ग्रोथ के लिए परफेक्ट काम करे जा रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग गाइडेड बाय एनी सडन डिसीजन इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक जो थोड़ा जियो पॉलिटिक्स गवर्नर जी ने मेंशन जरूर किया है, पर उन्होंने एक भी मेंशन का ग्रोइंग डेट टू जीडीपी ऑफ सम other markets can be a hindrance. I think that should be watched because we can see at least a few large economies are really increasing their debt quite significantly. So I think that is very important that we keep an eye. Geopolitics plus that, I think, are the 2 outliers. But best part is GDP is doing well and inflation on a decline. At the right point, we'll get a rate cut. On LCR, I think it's a very important framework because राइट नाउ इन गुड टाइम्स वी शुड प्रिपेयर फॉर बैड टाइम्स। तो अभी मुझे नहीं लगता कोई लिक्विडिटी में ज्यादा प्रेशर है किसी बैंक पे या कोई बैंक में कोई इश्यू आ रहा है, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो हम ऐसे प्लान्स बनाएं कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसके लिए रेडी हों। सो आई थिंक आई कैन सी द एलसीआर फ्रेमवर्क बिग रीलुक्ड एट कि अगर कोई सडन बैंक से डिपॉजिट्स का बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एग्जिट आए तो व्हाट शुड वी रिस्पॉन्ड। So I think it is more in let's get ready if ever we need it. I think that is the moment that I see. स्टेप एलसीआर ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का, और साथ ही गवर्नर ने ये भी बोला कि फिलहाल तो सिस्टम में कोई भी लिक्विडिटी क्रंच नहीं है बल्कि सरप्लस ही हम देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल दीपक जी आपसे होगा, क्योंकि आपने अपने इन्फ्लेशन और रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बताए, बट बॉन्ड यील्ड्स पे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के दौरान ही हमने देखा था कि 2 बेसिस पॉइंट्स का जंप ऑलरेडी वहां पे आ गया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में, और साथ ही यूएस में भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर ही जा रही हैं। तो वहां पे क्या कुछ आप उम्मीदें लगा रहे हैं? क्या यहाँ से थोड़ी और तेजी हो सकती है बॉन्ड रेट्स में? बॉन्ड रेट्स फाइनली क्रूड, आज पॉलिसी में तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि आरबीआई कोई एक्शन नहीं लेगा, तो मार्केट सिंस पॉलिसी एक्सपेक्टेशन पे आई है तो मार्केट में काफी ज्यादा रिएक्शन नहीं देखा। ये इमीडिएटली आफ्टर पॉलिसी हमने 2 बेसिस पॉइंट की बड़ा इंक्रीज देखा, बट अभी बॉन्ड रेट्स करीब आधे बेसिस पॉइंट या 1 बेसिस पॉइंट ऊपर है। यूएस यील्ड्स भी हम देखेंगे तो यूएस में स्ट्रॉन्ग डेटा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स भी वहां ऊपर आ रही है, उसके कारण क्यूमुलेटिव रेट कट एक्सपेक्टेशंस वहां पे कम हो रही है। बट पोवेल ने ये वीक जब भी गवर्नर पोवेल ने बात किया है तो उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि इट्स टू अर्ली टू से वेदर इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू राइज इन यूएस,
और वो अभी भी 75 बेसिस पॉइंट ये साल रेट कट गाइड कर रहे हैं। तो यूएस में भी हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में यूएस सेंट्रल बैंक रेट कट करेंगे। यूएस यील्ड्स जो है वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगी। रेट कट के कारण हमें लगता है कि यूएस में जो यील्ड कर्व आज के डेट में इन्वर्टेड है, जहां पे 2 साल के बॉन्ड्स 10 साल के बॉन्ड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वो धीरे धीरे, क्योंकि क्यूमुलेटिव रेट कट्स कम होंगे, उसके कारण हमें लग रहा है कि वहां पे यील्ड कर्व स्टीप होगा। इन क्रूड एक चीज है, क्रूड अगर यहाँ सेटल हो जाता है तो इंडियन बॉन्ड यील्ड्स में ज्यादा वरी नहीं रहेंगे ट्रेडर्स, और इंडियन बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा करके स्टेबल है। इंडियन बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो रहे हैं जून से, उसके कारण ये साल हमें 25 से 30 बिलियन डॉलर फ्लो आने वाले हैं, और ये फ्लोज के कारण हमारी बॉन्ड यील्ड्स मोर और लेस स्टेडी रहेंगी। अगर यूएस यील्ड्स नीचे गिरती है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मूवमेंट इन यूएस यील्ड्स हमारी बॉन्ड यील्ड स्टेडी। यूएस यील्ड्स काफी ऊपर जाती है सपोज, तो हमारी यील्ड्स रिलेटिवली कम ऊपर जाएंगी, और यूएस यील्ड्स नीचे आती है तो हमारी यील्ड्स काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट से नीचे आएंगी। मोटा मोटा हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये साल जो स्प्रेड इंडियन बॉन्ड्स और यूएस बॉन्ड्स का है वो कंप्रेस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 25 से 30 बिलियन डॉलर फ्लोज आएंगे बॉन्ड इंक्लूजन के कारण। ग्लोबल मार्केट से थोड़ा ज़्यादा अच्छा सेटअप लेके यहाँ पे इस समय बैठे हैं। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा मैं पता कर लेता हूँ कि इस समय क्या करना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील कुमार सिन्हा भी हैं। सुनील जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार पॉलिसी पे आपका टेक चाहिए सर। मिस्टर गवर्नर को आपने भी सुना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने स्क्रीन पे रख दिए। सुनील सर, आपका टेक क्या है? नहीं, ब्रॉडली जो आज की पॉलिसी है वो अपेक्षा के अनुरूप ही है। पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में कोई बदलाव नहीं। जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो अभी भी ये संकेत कर रहा है कि 2025 में भी जो इन्फ्लेशन की दर है वो टारगेट रेट जो 4% है वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद तो जरूर है कि आने वाले समय में जब इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ी बहुत और पकड़ मजबूत होगी और ट्रेजेक्टरी और ज्यादा स्पष्ट होगी, तो हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ करंट फिस्कल ईयर में आरबीआई जो पॉलिसी रेट है उसमें कुछ बदलाव लाए, कुछ गिरावट आ सकती है। पर ये सारी चीजें जो है बिल्कुल डेटा डिपेंडेंट होंगी। ये इस समय ये मान के चलना कि सेकेंड हाफ में पॉलिसी कट होगा ही होगा would be a little far-fetched, simply because ultimately policy making is all about what is going to happen in the future, not what is happening right now. So इसलिए जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है आरबीआई की वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना बहुत जरूरी है अपनी अपेक्षाओं के संदर्भ में। और इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जहां तक ग्रोथ का सवाल है, ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग अपनी जगह बरकरार है। इसलिए आरबीआई को बहुत ज्यादा ग्रोथ के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तमाम जो प्रोजेक्शंस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रोथ में जो है मजबूती इवन फिस्कल ईयर 25 में बनी रहेगी। दूसरी तरफ जो स्थिति इस समय है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है उसमें सबसे बड़ा दबाव जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है वो दो चीजों से आता है। एक तो फूड इन्फ्लेशन है और दूसरा ऑयल इन्फ्लेशन है। तो ऑयल के प्राइसेस में जो अपटिक अभी रिसेंट कुछ दिनों में देखने को मिला है और जिस किस्म की स्टिकीनेस हमने फूड इन्फ्लेशन में देखी है, जब तक इन दो चीजों के बारे में ट्रैजेक्टरी जो है इस इन्फ्लेशन की क्लियर नहीं होती है, तब तक जो ओवरऑल इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी। इसीलिए आरबीआई लगातार कॉशियस है और लगातार हमें भी कॉशियस करने की कोशिश कर रहा है कि जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है हमें अभी भी फूक फूक कर कदम रखना है, ताकि
जो भी कदम अभी तक उठाए गए हैं और उसकी वजह से जो डिसइंफ्लेशनरी टेंडेंसीज इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है उसको जो वो एंकर कर रहा है, उसमें किसी किस्म की गिरावट ना आए। तो नेट नेट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पॉलिसी रेट्स हैं उनमें उम्मीद रखी जा सकती है कि सेकेंड हाफ में गिरावट आएगी, बट ये प्योरली जो है इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो आरबीआई के अपेक्षा के अनुरूप रहता है या नहीं रहता। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से बात की। जो आपने इन्फ्लेशन वाली बात बताई ना, एक्चुअली मिनिस्टर गवर्नर ने भी इसी को एक मुद्दा दे के बात बताया। उन्होंने कहा था एलिफेंट इन द रूम, जो रूम पे जो एलिफेंट है ना वो बाहर निकल गया रूम से, थोड़ा फॉरेस्ट की तरफ पहुंच गया है और हम चाहते हैं फॉरेस्ट में थोड़े लंबे समय के लिए रहे ताकि हम जो दरें हैं वो थोड़ी कटा पाएं। तो ये जो आपने बात बोली ना, ये मिस्टर गवर्नर ने कुछ इसका एग्जाम्पल इस तरह से दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। दीपक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर लोढ़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। सुनील सर आपका शुक्रिया। अजय कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और संजय पारिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो कवरेज में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कुछ हुआ। कुल मिला के इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी थोड़ा सा कॉज ऑफ अ कंसर्न है। उम्मीद करते हैं अगले 2-2.5 महीने के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा और कम होगा ताकि रास्ता साफ हो जाए। ध्यान रखा जाए, आरबीआई गवर्नर और फेड आपस में एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, इसलिए यूएस मार्केट्स को भी क्लोजली वॉच करना होगा कि वहां पे दरें किस रूप में और कब कटेंगी। अगर वहां पे जल्दी कटी तो फिर मार्केट के अंदर रिएक्शन आपको जल्दी शार्प दिखेगा। खैर, बाजार के हिसाब से देखें, जैसे हमने आपको सुबह भी कहा था कि मार्केट हो सकता है थोड़ा शेक करे, लेकिन ना ही लेवल्स को ब्रेक करेगा ना ही लेवल्स का ब्रेक डाउन करेगा। कुछ वैसा ही मार्केट दिख रहा है। 48,200 के नीचे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है और 18 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के नीचे अभी भी 22,500 के नीचे ही हम निफ्टी को लेके खड़े हुए हैं। डाटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी स्ट्रांग पोजीशंस हैं। कभी भी एक्सपेरिमेंट करना आज दिन भर में तो बैंक निफ्टी के साथ ही करना, निफ्टी के साथ आज एक्सपेरिमेंट करने का दिन नहीं है। थोड़ा पोलाइट और आज शांति वाला मार्केट रहने की उम्मीद लगती है। मेरे को, सृष्टि को और पूजा को आप इजाज़त दे सकते हैं। अब 11 बज चुकी है। आपके सवाल जवाब के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे, फिर कम्युनिटी मार्केट सेगमेंट देखेंगे और फिर हम डेरिवेटिव्स के शो भी लगातार आपके लिए प्लान कर रखे हमने। हम तीनों को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार। खर्च की बात, निवेश की बात, बचत की बात, अब होगी बीमा की बात। ईटी नाउ स्वदेश लेकर आ रहा है इंश्योरेंस का सबसे बड़ा आयोजन। ईटी नाउ स्वदेश पर दिग्गज बताएंगे बीमा की तमाम बारीकियां। बेफिक्र जिंदगी और जोखिम से सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस क्यों है जरूरी, समझेंगे लाइफ और हेल्थ